Good evening to all of you. Our today's topic is security management and laws. In this chapter, we are going to discuss about the aspects of security management and laws that we implement to manage the security in organization. अभी तक हमने जो भी चैप्टर्स डिस्कस किए हैं उनमें हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो मेरे पास प्लेन टेक्स्ट है, जो मेरी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, दैट आई सेंड इन द फॉर्म ऑफ प्लेन टेक्स्ट, हाउ दैट प्लेन टेक्स्ट गेट कन्वर्टेड इनटू अ साइफर टेक्स्ट और क्रिप्टो टेक्स्ट so that it can be confidential between sender and receiver. But when I talk about the corporate world, there is lot of information that needs to be managed. There are lot of assets that need to be managed. For that purpose, I need security management, and there should be some of the rules and regulations that comes under laws that we need to implement. So we will start with the basic introduction of this chapter. Security management is actually a vast field that will allow us to physically protect our information and all the tangible and intangible things. Like in an organization, I can be having building, I can be having some of the physical assets, like furniture can be there, systems can be there. So all these things needs to be protected. So I can safeguard them at malls, museum, high tech security can be used. And in terms of when we talk about information security, we can protect the information through some of the information security algorithms, cryptographic techniques. So broadly, security management can be classified into two parts, that is physical as well as information security. जब हम लोग फिजिकल सिक्योरिटी की बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट the people and the buildings and the physical assets that we are having in the organization, how we are going to protect that. In terms of information security, we talk about the identification, authorization and access control of the information. मेरे पास कितनी information है कि मैं बाकियों के साथ share करना चाहती हूँ और कौन सी information है that I don't want anybody to access without my permission. So why we needed security management? So these are the basic needs for the security management to protect intellectual property. Now this word intellectual property, this is very new to us. What do we actually mean by intellectual property? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है क्या? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कोई भी ऐसी चीज़ है जो हमने खुद अपने ब्रेनस्टॉर्मिंग से, अपने आइडिया से बनाई है. इट कैन बी लिटरली आर्टिकल बाय यू, इट कैन बी एनी पेंटिंग दैट यू हैव मेड, इट कैन बी एनीथिंग that has been designed by only us, that belongs to my own intellectual property. If I want to manage, if I want to protect my intellectual property, I need some of the security policies, I need to purchase some of the security policies for that in my intellectual property. Next is to manage data integrity. What do we mean by data integrity? Actually, integrity is correctness. Sender and receiver both are having trust on each other, that is why they are sharing information with each other. Sender is sharing information to receiver, and receiver is trusting sender that all the information that I am receiving from the sender is best of his knowledge. It is not tempered, it is not being attacked, it is not being changed in between. To manage the integrity of the information, we need security policies. इंटीग्रिटी मैनेज करने के लिए कुछ हमारे पास हैशिंग टेक्निक्स होती हैं जो हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस करी थी. तो जो वो हैशिंग टेक्निक्स हैं, दीज ऑल टेक्निक्स आर मैनेज्ड बाय सिक्योरिटी पॉलिसीज. नेक्स्ट इज टू सिक्योर पर्सनल आइडेंटिफाइएबल इंफॉर्मेशन. हम लोग कोई भी वेबसाइट अगर असेस कर रहे हैं, बहुत सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जो हम लोग वहाँ पे फिल कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग एक शॉपिंग वेबसाइट की ही बात कर लें तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, जैसे मेरा क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड नंबर हो गया, तो मैं वहाँ पे शेयर कर रही हूँ. कई बार हम लोग वहाँ पे अगर हम लोग मोबाइल ऐप्स यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग वहाँ पे अपना कार्ड सेव भी कर लेते हैं फॉर फर्दर यूज़. मोस्टली हम लोग ये कर रहे हैं. लेकिन जो इन्फॉर्मेशन हमने उस वेबसाइट के साथ शेयर करी हुई है, उस इन्फॉर्मेशन को इट इज़ द मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट वेबसाइट टू सिक्योर दैट इन्फॉर्मेशन, टू कीप दैट इन्फॉर्मेशन सिक्योरली. सो
we need security policies there also. Last but not the least is system interconnectivity. We in organization, we are connected with each other, we are sharing lot of information with each other. जितना भी डेटा, ऑल द सिस्टम्स दे आर दैट आर शेयरिंग विद ईच अदर, जितना भी डेटा वो लोग आपस में शेयर कर रहे हैं, उनके ऊपर जो सिक्योरिटी पॉलिसीज़ हैं वो सभी एक बैलेंस तरीके में लगनी चाहिए. हर किसी को एक पैरेलल सिक्योरिटी पॉलिसी मिलनी चाहिए सो दैट दे कैन शेयर इक्वल एंड पैरेलल इंफॉर्मेशन विद ईच अदर, एंड देयर शुड बी अ ट्रांसपेरेंसी इन द सिस्टम्स एज वेल. नेक्स्ट वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, असेस कंट्रोल. What do we mean by access control? अगर कॉमन लैंग्वेज में बात करें कि असेस कंट्रोल है क्या, हाउ आई एम गोइंग टू मैनेज द असेस ऑफ माई इंफॉर्मेशन, ब्रॉडली वी कैन से, वी कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ फेसबुक और व्हाट्सएप एज वेल. मेरी कौन सी इन्फॉर्मेशन है कि मैं बाकियों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, और कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो मैं बाकियों से शेयर नहीं करना चाहती. ऑल कम्स अंडर माई असेस ओनली. It is actually process by which user grant accesses or certain privileges to the system, resources और information. किन यूज़र्स को मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन देखने के असेसेस प्रोवाइड करने हैं, किन किन यूज़र को मैं वो असेसेस प्रोवाइड नहीं करना चाहती. Actually, whenever I want to give accesses or I want to take accesses, I need to provide some of my basic credentials. बेसिक क्रीडेंशियल्स कैसे, मेरी कुछ पर्सनल आइडेंटिफिकेशन, इट कैन बी पासवर्ड, पिन, स्मार्ट कार्ड नंबर, फिंगरप्रिंट कैन बी वेरीफाइड, और इट कैन बी बायोमेट्रिक मेजरमेंट. बायोमेट्रिक मेजरमेंट काफ़ी तरह की हो सकती है, लाइक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट iris biometric is there, fingerprint biometric is there, even tongue biometric is there. So lot of biometric methods we are using nowadays. Now, what are the major components for this access control? Access information, access हम लोग देंगे कैसे बाकियों को? Through identification, authentication and authorization. Basic सी चीज़ है. Identification is basically you are proving your identity, that this is my ID, I want to enter into your system. So we will first of all discuss about identification. It is the process of presenting an identity to the system. सबसे इनिशियल स्टेप है, किसी भी सिस्टम में एंटर करने के लिए आपने अगर अपनी जीमेल में भी लॉगिन करना है तो उस सिस्टम में भी एंटर करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग क्या प्रोवाइड करते हो, अपनी ईमेल आईडी, दैट इज़ योर पर्सनल आइडेंटिफिकेशन. इट कैन बी थ्रू एंटरिंग यूज़र नेम और लॉगिन, anything, fingerprint scanner, anything that we need to provide to give our personal identification. Next is authentication. Identification का next step जो है वो authentication है. Like you have entered your email, after that you need to authenticate yourself, you need to prove yourself. ईमेल एंटर करने के बाद आपको क्या एंटर करना पड़ेगा, अपना पासवर्ड. So it is the next step, means we are validating ourselves. So next is authorization. सारी इन्फॉर्मेशन हमने दे दी है. आई हैव गिवन email ID also, I have given password also. Now email ID and password, it will be checked at the back end by the server. Server will authorize that yes, given user has given me ID and password, so these matches with each other. After that it will provide us authority to enter the system. Yes, this is the authorized person, so you can enter into the system and access the data or files. So it is normally preceded by authentication for users identity verification. After complete verification, आपकी identity जानने के बाद, आपकी authentication check करने के बाद, it will provide you authority to access the information.